वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम आई वुड से टोरंटो और कराची, नॉट श्योर वेयर ही इज दीस डेज, इज इन इस्लामाबाद, इससे पहले भी एज वेल। आरिफ लखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर, इट्स एक्चुअली एन ऑनर, क्योंकि मैं अब कुछ देर पहले उनको यही बता रहा था कि आई हैव प्रॉब्ली सीन नियरली ऑल ऑफ योर एपिसोड्स सर, थैंक यू सो मच, एंड दैट्स माय मॉर्निंग वॉक्स बेस्ट थिंग टू डू। जबरदस्त, दैट मेक्स मी सुपर हैप्पी। इट्स अ हाई एफर्ट लो व्यूअरशिप कंटेंट, तो जब भी कोई आके ये बोलता है ना तो दिल को खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्वर्जेसन से पहले, तो आई जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज करूँगा। नॉर्मली वी गो विद एन अर्ली लाइफ एंड उस तरह से, बट टुडे I'd like to understand, I know that your personal experience is very diverse. You've been in the film and drama industry, you've been in the how would you call it, consumer electronics industry. You recently are actively focusing on a startup, Kist Bazaar, जिसको हम डिटेल से बात करेंगे। तो how does that work? How does one come across so many different nodes of work and are able to manage all of that? The stereotype answer is that I look for those opportunities. Fact is that they've all come to me in one with the other. आपने मूवी की बात की, friend of mine was very active in dramatics when he was in school. Right. Always wanted to make a movie, so he wanted to make a movie fund in 2017, and he came to me and he said that, would you like to participate in it? And I said sure, I mean बड़ा अच्छा idea है। मैं कनाडा में रहा करता था, and just like any other investment, I thought this would be a good investment too. And I said, who all are in there? So he said one of them is Pakistan ki one of the highest number of screen owners. He'll be the anchor investor in there, and then you can come in, and the idea is that we do 6 or 8 movies a year, and we make the industry better and we make money out of it, right? I mean, I think anything where you don't make money, it's not a sustainable thing. Absolutely. That's my thought. It could be very controversial, but that's how I see it. It should be a win-win for everyone. So मूवी का फंड जब बनने लगा तो पाकिस्तान में इंडियन मूवीज़ बैन हो गई, राइट, जिसकी वजह से वो भाई जो थे वो इस फंड से निकल गए। उन्होंने कहा भाई अब तो वैसे ही सस्टेनेबल होना ही मुश्किल है, बिकॉज इंडियन मूवी जैसे ही बैन होती है सिनेमा का फुटफॉल जो है वो 70% टूट जाता है। Oh, so I would have thought that would have been an opportunity, but actually unfortunately not yet, because I think what we are creating, I think we create great stuff, but I think whatever we are creating is still not as much in demand as what Shah Rukh Khan gives out. Absolutely. Right? So he got out of the whole fund, and at that point we were already talking to one group of people for a movie called Parchi, right, and they're all Islamabad based, so I'm sure you know them. So it was too late to back out. So then I went in, and then I went in as a producer. अच्छा, independently. तो वो दिन और आज का दिन, between 2017 and now, I've done 2 movies co-produced, 1 drama co-produced, and 1 drama on my own. So every year or every year and a half, I do one. But अब ये इतना, especially dramas, अब पाकिस्तान में आई होप कोई भी ड्रामा वाला, कोई चैनल वाला नहीं देख रहा हो ना, मेरी रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी। वो एक इतना ईजी प्रोसेस बन गया है कि there's a script, there's a director, the cast is decided, the locations are decided. अब उसमें से आपको ये देखना है कि जो आपका on ground production manager है, he is doing what he's told. Other than that, everything happens. It's like running a factory. आप देखिए कितने चैनल्स है, कितने ड्रामा है, आपको लगा हर जगह प्रोड्यूसर बैठता है, नहीं प्रोड्यूसर जाता। मतलब यानी I can tell you the best movies that have been produced out of Pakistan, producer has never seen the set. Acha, interesting. Yeah. And have you been able to make the money? So Parchi, again, going on records with this, Parchi and Heer Manja, the 2 movies that I co-produced with Harim Farooq and Imran Raza Kazmi, the real producer on ground, both were decent, not extravagantly amazing, but they were all decent. Again, मैं purely business terms से पूछूं, तो what's the percentage of return that one can potentially, I'm not saying कि मुझे उन particular films का बनाएं, but on average कितना % year on year आप अपने पैसे को essentially? So ड्रामे के अंदर शॉर्ट नंबर आ जाता है, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू नो, ड्रामा बनने से पहले बिक जाता है। ठीक है, वो एक पर एपिसोड प्राइस डिसाइड हो जाती है, चैनल गेट्स ऑन बोर्ड विद एवरीथिंग, सो उसका 19-20 हो जाएगा। सो इफ आई हैव टू आंसर देन ड्रामा, यू आर लुकिंग एट मे बी अबाउट 25% year over year, right? Movie is completely unpredictable.
Yeah. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारी पहली मूवी वाज मे बी वर्थ अबाउट 4 करोड़ रुपए ऑफ कॉस्ट and it did 12 crore ka box office. We don't get 12 crore in our hand to start with. Right. But what we started introducing in that movie was product placement. McDonald's was great. McDonald's gave us 5 million for that movie. Right. We got some from Kareem in those days and some others, etc., etc. So now it all depends on what else can you do with it. Right. Can you sell it on Netflix? Can you sell it to a person who wants to make the brand of their image go higher? Right. Then it makes a lot of difference. We were the only movie that probably released in those days in France, in Saudi Arabia. We actually did a premiere in Saudi Arabia. Achha. We were the first outside movie that went to Saudi Arabia in 2017-18. So, yeah, I mean, a lot of those were just to maybe enhance the image of the industry. But my end concept ye tha ki it should be a material success for us to keep on doing it, for it to be sustainable. For the money to actually come back. Yeah. ये नहीं कि एक दफा डाला उसके बाद निकाला and then move on. So for us, in both the cases, it definitely came back. And dramas के अंदर जो बाहर के ड्रामाज होते हैं, एक पायलट शूट होता है, वो जाता है स्टूडियो कहता है ठीक है, फोकस ग्रुप होता है, फोकस ग्रुप बताता है कि यार ठीक है हो जाएगा, एंड देन ड्रामा एसेंशियली शूट होना शुरू होता है. पाकिस्तान में इस तरह का प्रोसेस है या इज इट मोर लाइक के स्क्रिप्ट वगैरह है, ठीक है अप्रूव हो गया, पूरा ड्रामा शूट किया और अब जाके बेचना है किसी ना किसी स्टूडियो को? तो इस बात को एडिट आप कर सकते हैं बाद में. पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी चैनल में चले जाएं, देखिए पाकिस्तान में 3 बहुत बड़े चैनल हैं और 12 उससे थोड़े से नीचे चैनल्स हैं. आई वर्कड विद जियो, ARY एंड हम. So if you go to any of these channels, they normally have a lot of scripts ready, written by good people, and they would like you to take one of those scripts up. So because they are giving you the script, they are okaying on the director. Yes, sort of. It's pre-approved. They are okaying on the locations too. Right. कि आपको पीछे ये दिखाना है, ये इतनी मिनट की होगी. दूसरी स्टोरी ये है कि एक दिन के अंदर जो हम 9 घंटा शूट करते हैं, उसका 34 मिनट का एडिट निकलता है. अच्छा. सिर्फ. राइट. तो अब अगर 34 मिनट का एडिट निकालना है तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम टू प्ले अराउंड. फॉर एग्जांपल एक एक्ट्रेस आ रही है, वो यहाँ से फ़ोन उठा रही है, दिस कुड बी 3 minutes और दिस कुड बी 3 seconds, राइट? सो डिपेंडिंग हाउ फास्ट यू वांट दैट थॉट टू गो थ्रू, that is done by the channel and not by us. The edit is done by the channel. We give them a footage of maybe 9 घंटा every day और उसमें से वो 30-35 एवरेज 34 मिनट निकाल रहे होते हैं. अच्छा. And we are paid on that. We are paid on the minutes that will actually go on TV, and not what we produced. Have you guys like sort of explored the video on demand side, like again Netflix? So video on demand. So I've had a lot of conversations with Netflix, probably because they're easier to access if you live outside. And Netflix का एक बड़ा अजीब बात थी, 2018 की बता रहा हूँ. They said कि यार Pakistan has 50,000 paid users only. Right. India has 5 million. हम कहाँ से बनाए content brown? आपसे क्यों से? Right. So that was the thing. But now Z5 has made a lot of content from Pakistan, even though Indian channels are not allowed to portray Pakistani actors. But अगर आप Z5 उठा के देखें तो आधा content पाकिस्तान में बना हुआ, which is great. Yeah. So, but how is it money wise? I don't know. Haven't really explored that. That's never been a full time thing for me. But I'm sure it's decent because good producers are doing it. And are there good producers talking to Netflix as well, or is that something जो कि ज़ाहिर है because of your proximity? Not yet. अच्छा, because the reason why I'm saying this is मेरे दिमाग में बड़ी बेसिक सी चीज़ आती है. Netflix के ऊपर आपका conventional जो है ना, so पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री बड़ी स्टैंडर्डाइज्ड है. एक सर्टन टाइप ऑफ स्क्रिप्ट है, एक सर्टन टाइप ऑफ ड्रामा, एक सर्टन टाइप ऑफ फ्लेवर है, उसमें थोड़ा सा कोई ना कोई इधर उधर कर लेता है कोई. चलो जी, थोड़ा सा ट्वीक होता है. पिछले दिनों कलर के ऊपर एक ड्रामा चल रहा था, वो बड़ा फेमस हो गया. इस तरह से कोई एक्टर वगैरह फवाद खान टाइप्स आ गए तो थोड़ा सा एक हो जाएगा. बट जनरली इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड ड्रामा इंडस्ट्री उस तरह से. So do you expect the channels to take that risk? Like you said, it has to be a win-win, and they have a good business going. They don't want to sort of risk it. फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि शायद मैं वीडियो ऑन डिमांड से वो कर सकूँगा. अच्छा, वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, जाके मैं कहता हूँ कि यार मैं कन्वेंशनल डायरेक्टर उठाऊँगा, मैं कन्वेंशनल एक्टर उठाऊँगा, तो द फैक्ट इज़ कि वीडियो ऑन डिमांड की ऑडियंस भी डिजिटल है और जो मैस मार्केट है वो बैठी हुई है और वो यूट्यूब पे देख रही है अपने कन्वेंशनल ड्रामास. तो डिजिटल की ऑडियंस जब आती है, मैं इस तरह से मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ऑन दिस पॉडकास्ट पीपल हैव एक्चुअली सेंट मी, सो वी डू एन ईजी पैसा जैज़ कैश एंड पीपल हैव सेंट मी 10,000 रुपया फ्रॉम इंटीरियर सिंध आफ्टर दे वॉच द कॉन्टेंट. सो पाकिस्तान में वो जो वो था ना कि लोग सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे ही नहीं देंगे, वो बड़ा चेंज हो गया है. सब्सक्रिप्शन तो ये ना कि मैं पैसे दूँ और मैं कंज्यूम करूँ. मुझे तो लोगों ने
आफ्टर कंजम्पशन ही भेजा है एज अ वो ऑफ गुडविल. I know for a fact that a lot of other creators, जो digital first creators हैं, they are, I mean, I'm not उस तरह से, but there are a lot of people जो skits करते हैं, you know, tiktokers हैं, वो सारे के सारे. अगर कोई फॉर्मूला ऐसा भेजा जाए नेटफ्लिक्स को जाकर कि सर आप एक शो वो करें, सैंक्शन करें, नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वन, मे बी लाइक एन इंडी शो, बट हैव सम ऑफ दीज टॉप टियर डिजिटल आर्टिस्ट्स इन देम. I can guarantee you the pull that these digital artists will have in just getting the subscribers in for the first time, because ये तो सुबह शाम बेच रहे हैं, ये शैम्पू भी बेच रहे हैं, ये डिजिटल सर्विसेज भी बेच रहे हैं, ये BNPL भी बेच रहे हैं ऑनलाइन, ये सर्विसेज फॉर वीडियो ऑन डिमांड भी बेच सकते हैं. एंड में मसला नेटफ्लिक्स, देखिए नेटफ्लिक्स अमेजोन अलग अलग है, हम नेटफ्लिक्स की बात कर लेते हैं. नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पेइंग कस्टमर्स बहुत कम है. मैं वही कह रहा हूं, अगर उनको अच्छा भी लगेगा तो वो आपके शो की वजह से क्या हमें पे कर देंगे, क्योंकि पेइंग का मतलब ये कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. बिल्कुल, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप उनको मॉडल ये नहीं कह रहे कि मेरा शो बड़ा आर्टिस्टिकली अमेजिंग है जी. मैं ये कह रहा हूँ मेरे शो के ऊपर जो बेसिकली यू डिज़ाइन अ मॉडल ये है कि जी मैं क्रिएटर्स को, डिजिटल क्रिएटर्स को उठाऊँगा. अच्छा, इंडिया ने ना अर्ली ऑन नेटफ्लिक्स में यही किया था. दे गॉट देयर डिजिटल, एक शो था उनका लिटिल थिंग्स, जी बिल्कुल, डिजिटल फर्स्ट शो था, उसको लेकर गए. अच्छा, उससे हुआ कि या क्या कि जो डिजिटल का कंज्यूमर था, लेट्स से बेकार फिल्म्स हो गई या मूरू हो गया या जुनैद अकरम्स ऑफ द वर्ल्ड हो गए जी, वो अगर एक नेटफ्लिक्स शो में जब स्टार करेंगे ना तो उनके सोशल्स के ऊपर तो उनके आ रहा होगा कि भाई का पाकिस्तान का फर्स्ट नेटफ्लिक्स शो भाई उसके अंदर है. बट आई डोंट नो, सो रिसेंटली दिस हैज हैपेंड. मायरा हैज मेड अ ड्रामा विद शावीर. आई थिंक इट विल बी गुड आइडिया फॉर यू टू आस्क व्हाट द नंबर्स आर. हमने भी अपनी मूवी की प्रमोशन में शावीर को ले गए थे, एंड people were crazy when Shavir walked in, and then we thought that maybe the next movie should have Shavir in it. Yeah. Right. But I think the acceptance of TikTokers and YouTube stars is not the same on the other media. On the other media, absolutely. Right? Not on, let's say, cinema or even TV. Yeah. Laptop पे फर्क है कि laptop पे I am ready to convert. So I think it would be a good idea to find out इसका कैसा रहा है. I'm sure what you're saying makes sense if it's going to a digital place instead of we call it like an OTT place instead of going to TV or a movie screen. Makes sense. Sure. Makes sense. Moving away from the film and media industry, you know, I know that let's talk about the startup. जो आपने recently, how long has it been? किस बाज़ार? So formally started in November of 2021. तो ये 8वां महीना है. सही. And how's that going? I think amazing. जो हम सोच रहे थे उससे कहीं बेहतर. I'm sure इस सीट पे जो भी आता है वो यही कहता है कि मुझसे अच्छा कोई स्टार्टअप नहीं है. But I think दोनों चीज़ें सर्व हो रही हैं. Profit. We are not a loss-making startup like a lot of other startups. Because at 47, I don't want to get into a loss-making startup. And I think the purpose that we had in mind when we started this whole thing, we were very comfortable in Canada with what we were doing. I mean, right. My principal company does good on export, which is pretty decent. तो आइडिया था कि इसके पीछे थोड़ा सा एक सोशल मोटिव भी हो. Right. तो आई थिंक वो टाइम के साथ और ज़्यादा सर्व हो रहा है, और हम उसको रिफाइन भी करते जा रहे हैं. हम खुद ट्वीक कर रहे हैं अपने आप को कि अच्छा ये जो हम कर रहे हैं इससे ठीक है, वी आर मेकिंग द नंबर्स, बट इससे क्या फ़र्क पड़ा, इसकी जगह ये कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा. एक एग्जाम्पल इफ़ यू अलाउ मी, पहले हमने सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिए अपनी साइट पे कि टीवी भी है, फ्रिज भी है, बाइक भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, जो लेना है आप ले लें. एंड टू आवर सरप्राइज, वेरी डिफरेंट टू द लास्ट 25 years which we haven't spoken about, cell phone was 65% of the demand. 65% of orders were cell phones. अच्छा. So we were discussing amongst ourselves कि यार ये हो क्या रहा है. तो एक लड़की ने बड़ा अच्छी बात की. उसने कहा देखिए, एक घर के अंदर एक टीवी चाहिए, एक फ्रिज चाहिए, एक एसी चाहिए अगर वो रिच है, एक बाइक चाहिए क्योंकि बंदे को ऑफिस भी जाना है, मगर 4 मोबाइल फ़ोन चाहिए. हाँ. और इस वक्त क्योंकि वो बेचारा कुछ भी नहीं ले पा रहा है, तो और उसको एक ही आप चीज़ अलाउ कर रहे हो तो वो मोबाइल फ़ोन ले रहा है. हाँ. तो वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग मोबाइल फ़ोन मोर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि हमें नंबर्स भी चाहिए थे. Then we sat down and we were thinking कि यार इसका real impact क्या आ रहा है? Is that making a difference? Let's do something which also creates some sort of a difference. We started working towards refurbished laptops. Right.
Today, refurbished laptop is second highest selling product from us. You Achha. ask any other company, any other kisto wali dukaan or online system, refurb laptops will not be a big part, even though there's 100,000 laptops coming to this country every month. Right. But it's not going to individuals. It's going more to businesses. It's going to maybe government to some level. So our thought was that with all the issues that are going on, सबसे easy हल ये है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबको एक लैपटॉप दे दें, जो हमारे शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, और फिर उनसे कहें कि अच्छा अब इतनी सारी और साइट्स अवेलेबल है, अपवर्क है, फाइवर है, दूसरी साइट्स है, उस पर जाके आप अपना प्रोडक्ट दें. अच्छा, हमें थोड़ा सा एक एडवांटेज ये है कि बिकॉज मी बीइंग फ्रॉम द वेस्ट एंड हैविंग सम इंटरेक्शंस इन सिलिकॉन वैली, जो CTOs आज वहाँ हैं आफ्टर दिस क्राइसिस ऑफ लास्ट 6 weeks, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू पाकिस्तान इज दैट क्राइसिस. अच्छा. ये जो कैश फ्लो का क्राइसिस आ रहा है, इसका इम्पैक्ट CTOs के दिमाग में ये आ रहा है कि नाउ वी नीड चीपर लेबर. Now we cannot give $300,000 to a guy getting out of Yale or getting out of Stanford. Let's find someone on Upwork or Fiverr and then get them on board as our offline person. Right. So I think there's a lot of potential for these young kids who will come out. I'll tell you my story. When we started Kiss Bazaar, we had 2 really good designers, one graphic designer and one WordPress processors. Three months down, एक ने आके हमसे कहा कि I'm leaving the job. I said, what happened? यार, we are paying you 75,000 rupees. You were paid 45,000 last job. He said, sir, I'm paid $150 a week. Beat that. कैसे बीट करेंगे आप उसको? And now if I go full time, I'm going to do at least $500 a week or maybe even more. So, $500 is nothing, right? If you look at the scheme. Yeah. But in Pakistan, it comes to 5 lakh रुपए, 210 रुपए के डॉलर के हिसाब से. And this is a guy fresh out of NED. Not out of LUMS or GIK or Stanford. Yeah. So I think if we and people around us can focus more on giving these people that laptop to take home, वो ठीक है, वो गेम भी खेलेंगे, वो कुछ भी करेंगे. मे बी कॉन्फ्लिक्ट होगा, मगर कल मैंने डिस्टर्ब 91 अटेंड किया था, डिस्टर्ब 92 सॉरी अटेंड किया था. वहाँ पे एक गेमिंग पैनल था. वो गेमिंग पैनल में 4-5 बच्चे थे और उन्होंने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड्स हमारा एवरेज आदमी का सेल $10 मिलियन का है. और वो 10 मिलियन भी कम है, वो ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अगर वो चीज़ अपनी गेम बना के पब्लिश करनी है तो हमें $1 मिलियन एडवर्टाइजिंग के लिए बाहर भेजना है, जो हमें इस वक्त स्टेट बैंक शायद अलाउड नहीं कर रही. आई डोंट नो द रियलिटी, बट ये अलाउ कर रही है. तो हम ये करें कि दूसरों के लिए बना रहे हैं. अगर आप हमें अलाउ कर दें, we will go 5 times more and yeah, we will make the money, but government will get dollars. Yeah. So again, I spoke to one of those kids. I said, so how did you start? You look like a very humble guy, right? He said, yeah, we were just friends. We'd love to just move around the city. And in Karachi, one day we found this place from where we bought a laptop laptop on installments. And I said, what was that place called? So he said, yeah, naam nahi pata, but Sharia Faisal mein nursery pe koi jagah thi. I said, and what year was that? And he said, he gave me a year. And that was our place. Achha. He had taken a laptop from us on installments. And he did whatever he did with it. Yeah. Played games. माँ बाप को तंग कर दिया होगा उसने अपनी जिंदगी के अंदर. But now he is exporting games. Yeah. And he's one of the 4 largest exporters of Pakistan. Very cool. You mentioned your place that is giving laptops on installment. But your Kist Bazaar is 8 months old. Ji. Tell me a bit about the history of this place and what you've been up to. Yeah. So I actually joined a company which had 3 founders in it. In 1995, and the whole idea behind that company was किस्तों में सामान बेचना है. Whatever the cash price is, let's divide it in 6 installments and make it easier for people to buy. Not because we love people, but also because more people will come to us. And how did we advertise? We went on all the bus stops in Karachi, like वो 10 पैसे के brochures बांटते, and that's how we started. 7-8 years down, we were distributors for IBM in Pakistan and Acer in Pakistan. In fact, there was an ad that we placed in 1998, जो हमारे LinkedIn पे है अभी, और उस ad के अंदर, I remember I got a call from Humayun Bashir, the general manager for Pakistan or country manager for Pakistan at that point, and he said, "Yeah, what are you doing? You're selling our product on installments." And I said to him that I think we will get more sales. He said, that's fine, but it's never happened before. And अगर आप वो ad देखें तो वो ad में 32 MB RAM है, 4 GB हार्ड ड्राइव है,
क्योंकि उस ज़माने की वो टॉप द लाइन चीज़ थी और उसकी 4,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, 0% फाइनेंसिंग काइंड ऑफ थिंग. सो या वी बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल बट ऑफलाइन. किस बाजार का आइडिया वाज टू ब्रिंग इट कम्प्लीटली ऑनलाइन and have an exponential effect. अच्छा, क्योंकि there may be someone who might be confused. So, thoda sa if I were to ask you, what exactly is Kist Bazaar? Like, what's the elevator pitch for that, essentially? So, easy words में Kist Bazaar is buy now pay later for the unbanked. Okay. हम उनको टारगेट करते हैं जो हमारे ख्याल से कहीं और से वो चीज़ें नहीं ले सकते जो उनकी घर की रिक्वायरमेंट्स हैं. हमारा एवरेज कस्टमर 25,000 रुपये से 50,000 रुपये अर्न करता है महीने का. अब आप सोचें, एक आदमी जो 25,000 या 50,000 अर्न करता है वो घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कैसे ले सकता है? और ना उसकी कोई क्रेडिट है, ना कोई बैंक वाला जानने वाला है. उसके पास एक ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन है कि वो भूल जाए, वो ना ले, वो सारी ज़िंदगी उसी गुर्बत में रहे. दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी नेबरहुड बैड टू पुट दैट वर्ड बट पठान के पास जाए और वहाँ पे 120% इंटरेस्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट ले ले और फिर एक दफ़ा वो ले लेता है तो सारी ज़िंदगी उसके पैसे वो दे रहा होता है. Right. तीसरा ऑप्शन जो हमारे आसपास नेबरहुड दुकानें हैं किस्तों की, विच आई थिंक हैव डन अ ग्रेट जॉब. आई वाज वन ऑफ देम एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव व्हाट दे हैव टुडे. उसके पास जाए. अब हमारा कॉन्सेप्ट किस बाज़ार का ये था कि बहुत सारे लोग घबराते हैं किस्तों की दुकान एंटर करने से. रीज़न बीइंग, पहले तो उनको ये होता है कि यार मैं जानता नहीं हूँ. अगर मैं सलीम को जानता होता तो मुझे करीम दे देता, क्योंकि करीम सलीम को जानता है. दूसरा ऑप्शन ये होता है, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सोचते हैं कि यार जब हम यहाँ जाएंगे, सब देखेंगे, हम इस दुकान के अंदर एंटर कर रहे हैं, सब कहेंगे यार पैसे नहीं थे, किस्तों में लेना पड़ा. यू नो, इट्स स्टिल टैबू इन अ सोसाइटी टू बाय इंस्टॉलमेंट्स. जो रिच क्लास है वो सब कुछ किस्तों में लेता है, मगर जो मिडिल एंड मिडिल लोअर है वो डरता है किस्तों में लेने से. So, idea of Kist Bazaar is you don't need to know anyone. Go online, pick the product that you want. The process is that we don't care who you are. आप कोई भी हो सकते हो. हमारे बहुत सारे कस्टमर ट्रक अड्डे वाले हैं, नान बनाने वाले हैं. हमें आपके नज़दीक के 2 लोग जो आपके यहाँ नेबर्स हो या आपके आसपास की परचून की दुकान हो, दूध वाले की दुकान हो, उनसे शख्सी ज़मानत चाहिए. Which in English is called social guarantors. Right. और वो आपने दुकान वाला इस वजह से लिया बिकॉज दुकान वाले के साथ उसकी एक रिलेशनशिप होगी, उसको पता है कि फाइनेंशियल डीलिंग में ये कैसा रहा है. अच्छा, हमने दुकान को भी और फ्लेक्सिबल कर दिया है. अच्छा. हमने कहा दुकान वाला नहीं मिलता, नेबर्स मिलते हैं आपके, तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम. हमारा पॉइंट सिर्फ ये है कि आप सिर्फ कॉन्शियस रहें कि आपको पैसे देने हैं. अच्छा, और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या पैसे दें, मगर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफ़ा आप हमारे सिस्टम में आ जाते हैं तो आपकी लाइफ आगे इजी हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जब हमने किस बाज़ार स्टार्ट किया तो हमारे पास 2.5 लाख लोगों का डेटा था जिन्होंने हमसे लास्ट 25 साल में कुछ ना कुछ किस्तों पे लिया है. आप जैसे ही हमारी साइट पे जाके अपना आईडी कार्ड नंबर डालते हैं और अगर वो हिट होता है एज एन ओल्ड पर्सन, आपको कुछ नहीं करना पड़ता. शाम को आपके घर में सामान आ जाता है एंड स्टोरी इज क्लोज्ड. अच्छा. बिकॉज वी नो यू बीन देयर, यू बीन विद अस, यू वर ग्रेट, आपने सब कुछ सही किया और थोड़ा इधर उधर भी लेट हो गया, नो प्रॉब्लम. बट अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये कि नेक्स्ट टाइम आपको सामान नहीं मिलेगा. सोशल गारंटीज का जो आइडिया है वो ग्रामीण बैंक ने भी किया हुआ है. When Citibank started, and I can go on record saying this, with their credit cards in the 90s, I remember I used to see a team of theirs in our office every day because one of our partners was friends with the VP at that point, and they just wanted to learn how do you give stuff to the common person. ये भाग कैसे नहीं जाते? And we kept on telling them कि यार जो कॉमन आदमी है ना वो सबसे ज़्यादा शरीफ है, वो बेचारा सबसे डरता है. ये हम है जिसे मसला है. जब हमने ये IBM लैपटॉप्स वगैरह देना स्टार्ट किया इंस्टॉलमेंट्स, तो ऑनेस्टली इस पे हमें ज़्यादा बड़ा मसला हुआ, बिकॉज जिन घरों में ये जा रही थी उन घरों में गार्ड अंदर जाने नहीं देता आपको. सेक्रेटरी फ़ोन फॉरवर्ड नहीं करती बॉस को, जबकि एक आम आदमी का फ़ोन करें तो वो बेचारा कहता है नहीं कल आ जाएगी अगर आज नहीं आया तो. तो दैट्स द बैकग्राउंड व्हाट किस बाज़ार डज. इट्स फॉर एवरीवन. There is literally no discrimination. Even if you are a student, even if you are driver in किसी के घर में, तो आपके लिए ये है. That's how we are different with every other BNPL that's out there in the market today. I do think everyone will shift to it eventually, but आज I don't think there's anyone in that. And this is not a niche. This is the mass. Right. अच्छा, इसमें मैं I'll dive deeper into it now. And context मैं देता हूँ कि किन एरियाज को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और क्यों. Recently मैंने एक थ्रेड पढ़ा on Twitter and it was about this company called Easy Sarmaya or something like that. Okay.
It's not a BNPL, but rather a sort of loan, microfinance scheme of sorts. The company is SECP registered. It's registered in Gilgit. इनका ये था कि जी आप ऑनलाइन इनकी ऐप डाउनलोड करते हैं और ये आपको छोटे कर्जे, तो इन्होंने पूरा मार्केट किया हुआ है हर जगह के ऊपर कि 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 के नैनो लोन्स आपको मिल सकते हैं। खैर वो आप जब जाते हैं तो जाके आप जो है ना वो अच्छा एंड्रॉयड पे होते हैं, छोटे जो ऑडियंस है वो एसेंशली मैसेज हैं, उन पे जो भी लिखा हुआ आता है वो उनको समझ ही नहीं आता, वो यस करके कर देते हैं। उसके बाद वो 50,000 रुपये का लोन मार्केट करके वो आखिर में आपको 8, 10, 15,000 रुपये का लोन देते हैं। अब जो ट्विटर पे मैंने पढ़ा वो मैंने एक केस स्टडी पढ़ी, एक बंदा था उसका ही तो CFA, तो हैवी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड उसका कोई आई थिंक इट्स हिज ड्राइवर और समथिंग, जिसने वो लोन अप्लाई किया। द लोन वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन वाज 16,000. He got that loan on the 17th of May. By the 16th of June, he had returned, in 1 month, he had returned 21,000 rupees. ठीक है? अच्छा, somehow उनकी terms God knows क्या थी, but as of yesterday, जो Twitter thread की update आई हुई थी, उसके बाद वो 23,000 rupees मजीद मांग रहे थे. Now, does that make any sense to you? No, absolutely doesn't. But you'll always have these kind of players everywhere. And right? yeah, and that's why I'm saying कि वो एक तो जो आपने कहा ना कि गली के साइड पे जो लोन शार्क है, सर वो लोन शार्क अब डिजिटल पे भी आ गया। ठीक है। और वो रजिस्टर्ड है और वो है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो चूँकि दिस इज़ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, फाइनेंशियली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, you have to tread very carefully with them because the day they lose, हमारा एक बड़ा मसला है on the show we've talked very aggressively about banking of the unbanked population, of whitening the economy, of digitizing the economy. जिस दिन आपने इस ऑडियंस को एलिनेट करके साइड पे कर दिया और वो एक दफ़ा फंस गया अपने उसमें, वो कहेगा यार कभी किसी ऐप को नहीं करना। बड़ा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल नीड टू गो थ्रू दिस केस स्टडी। उन्होंने वो क्या करते हैं, वो आपकी जो यस करवाते हैं ना, वो आपकी सारी तस्वीर की एक्सेस निकालते हैं, वो कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी निकालते हैं और आपको वो ब्लैकमेल करते हैं कि यार ये आपकी तस्वीरें हम आउट कर, मतलब इट्स क्रेजी हाउ दिस इज़ अ रेगुलेटेड एंटिटी. Now, what I want to understand is, first of all, I want to have a view of the transparency of your company. I want to have a view of exactly the product that you're providing and whether there are caveats to it and, you know, चाहे वो छोटी मोटी चीज़ें left right क्या हैं. And lastly, I also want to have an understanding of really the model, the Sharia compliance of it. के कहने को तो आप कुछ भी करते हैं कि यार ठीक है यार ये चीज़ हम इस तरह की निकाल रहे हैं, उसके बाद अगर हिडन चीज़ें आ रही हैं ना, दैट्स नॉट समथिंग दैट्स एब्सोल्युटली फॉर द मासेस. सो लेट्स स्टार्ट विद सॉरी आप कुछ कह रहे थे. मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी बात ये कि हमने और आपने इस बारे में ऑफलाइन बात नहीं की है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो फ्रेश बात कर रहे हैं. सो आई लाइक दैट एंड आई टेल यू एग्जैक्टली व्हाट वी डू एंड देन यू कैन करेक्ट अस कि अगर कहीं ऐसा आपको लगता है कि हम कुछ ऐसा करें जो हमें नहीं करना चाहिए, तो मैं रीजनिंग दूंगा कि हम क्यों कर रहे हैं. ठीक है. सो हमारा प्रोसेस ये है कि आप हमसे जब सामान लेते हैं तो आप ऑनलाइन अपना नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस डालते हैं, 4 चीज़ें डालते हैं. ठीक है. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका आईडी कार्ड नंबर है. आपके आईडी कार्ड नंबर से हमारे सिस्टम में घूमता है कि आपने लिया नहीं लिया. उसके बाद आपको एक कॉल आती है एक खातून की या एक जेंटलमैन की, और वो आपसे कहता है कि ये जो आपने ऑर्डर दिया है इसको परस्यू करने के लिए आपको 2 शख्सी ज़मानत चाहिए होगी. तो पहले सवाल वो आदमी पूछता है कि शख्सी ज़मानत में क्या चाहिए होगा, तो उसे कहते हैं हमने पढ़ा नहीं वहाँ था, तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं पढ़ा. इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. तो हम कहते हैं शख्सी ज़मानत किसी की भी हो सकती है. तो कहते हैं मेरा भाई नेक्स्ट डोर रहता है उसकी दे दूँ. कहते हैं कोई मसला नहीं, दे दें. उसको क्या करना होगा, उसको आपके पास आना होगा, उसको कागजात जमा कराने होंगे, उसको अपना सोना देना होगा, उसको अपनी जॉब सिक्योरिटी लेटर या जॉब से साइन कराना होगा. हम कहते हैं कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है. हमारे पेपर पे जो उर्दू में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑफलाइन पेपर है उसमें लिखा होता है आपका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड नंबर, कहाँ काम करते हैं, तनख्वाह. हम वैलिडेट भी नहीं करते, इसमें नीचे लिखा हुआ है हम आपकी तनख्वाह वैलिडेट नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप सही बताएं. हम उससे एक सिग्नेचर लेते हैं आपके सामने. ठीक है. आपसे एक सिग्नेचर लेते हैं, वहाँ वो चैप्टर क्लोज हो जाता है. ठीक है. शाम को इज्जत से राइडर, हम वी यूज राइडर. सो राइडर is another, maybe I'm not sure if Salman ever came to your show, but it's another startup that delivers for Daraz. Right. वो इज्जत से आपके घर में आता है, अपने यूनिफॉर्म में डिलीवर करता है, ताकि आपके नेबर्स में कहीं ये स्टोरी ना आ जाए कि किस बाजार से कोई आ रहा है. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन ओवर टाइम, दैट
पीपल आर वेरी स्कैर्ड कि आसपास के लोगों को किसका नाम भी पता चल जाए, जबकि पूरे मोहल्ले ने लिया हुआ होता है, बट दे डोंट वांट टू नो अबाउट इट। ठीक है, कोई मसला नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो हम आपको इज्जत से शाम को डिलीवर कर देते हैं। जब आपको डिलीवर कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे आप एडवांस पेमेंट करते हैं। आप वेरिफिकेशन के वक्त 1 रुपया भी नहीं देते हैं। ओके। तो जब आपके पास सामान आ रहा होता है, अब सामान देखते हैं सामने, तब वो जो 4,000 6,000 जो भी आपका एडवांस बनता है वो आप देते हैं। ठीक है। अब जो प्राइस आपसे डिसाइड की गई होती है, वो नॉर्मली प्राइस का हमारा तरीका ये होता है कि ऑफ कोर्स कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जिसमें आप डिफर्ड पेमेंट टर्म्स दें एंड देयर इज नो एडिशनल चार्ज। So we have only one price, which is an installment price. We don't have a cash price. But if today you ask me कि यार in reality if I see the MSRP of Dolans, उससे मेरी प्राइस में क्या फ़र्क होगा अगर मैं किस्तों में ले रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि उसमें फ़र्क आपका होगा तकरीबन 12% का। 12% का तकरीबन फ़र्क होगा बिटवीन जो प्राइस आपको वहाँ पे स्टेटेड प्राइस मिली है, वो डिस्काउंट दे सकता है उस पर, वो एक अलग है, और ये प्राइस आप जो दे रहे हैं। अब 12% जो हमारे यहाँ अकाउंटेंट्स हैं उनको समझ आ जाएगा कि 12% का IRR नियरली 24% बनता है। ठीक है। या 26% बनता है, राइट, डिपेंडिंग है क्या डाउन पेमेंट है। तो ये टोटल प्राइस आपकी होती है, प्राइस पहले डिसाइड हो जाती है। वी आर इन ऑल टर्म्स शरिया कंप्लाइंट। We have spoken to muftis to get a certificate as well. We are just waiting for our NBFC license. NBFC is? A non-banking financial corporation license from SCCP. Right. Once we get that, the license will come in that name. Right. And the Sharia compliance will come in the name. Sharia के अंदर 3 चीज़ें हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, and I've spoken to 2 muftis who are on Mizan Bank, Habib Bank, UBL, all these places. And those are the ones who are certifying us. We're not going with anyone that we feel. So you've spoken to someone from Mizan Bank? Because they're probably at the forefront of Sharia compliance. To the mufti on their board. Okay. So that And makes... he will be the one who will, his company will be the one who will be giving us the Sharia compliance. Okay. That's great. 3 चीज़ें हैं। प्राइस शुरू में फिक्स हो जानी चाहिए, प्राइस के ऊपर कोई लेट चार्जेस नहीं होने चाहिए, प्राइस पहले से डिफाइन होनी चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि कल ये हो गया, आज ये हो गया, वगैरह वो वगैरह। फाइन प्रिंट में ये लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था, ठीक है। कस्टमर को पता होता है कि यार ये अमाउंट है, ये प्राइस है, और एज लॉन्ग एज, अब इसमें जो, क्योंकि मैं आपको अर्लियर एग्जांपल बता रहा था ना, वो बंदा महीने तक करता रहा, उसने 21,000 रुपये दे दिया, उसके दिमाग में ये था कि मैं फारिग हो गया हूँ, और वो पीछे से कोई अमाउंट ऐड होती रही और वो 23,000, और वो लोन शार्क कि वो कहीं ना कहीं से घुमा देखिए, जो करता आदमी ऑनलाइन कर रहा है ना, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ है, बिकॉज ही इज गोना गेट कॉट। अब आपने बात उठा ली, कल सुबह उसके पास 3 SCCP या पुलिस के इंस्पेक्टर चले जाएंगे, राइट। ऑफलाइन में ये काम होता रहा है। अगर आज आप अपनी मासी से पूछेंगे कि तुमने फ्रिज कहाँ से लिया, तो चांसेस ये कि उसने इसी किसी से लिया हुआ है, और अब वो जैसी उसकी किस्त ख़त्म होगी, जो कभी नहीं होगी, तब उसको एक और आइटम वो जानबूझ के देगा जिसपे वो 100% का एक्स्ट्रा लगाएगा वगैरह वगैरह। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग हैं, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 70% लोग हैं, क्या ये डिज़र्व करते हैं घर में एक TV लेना? क्या ये डिज़र्व करते हैं कि इनका एक बाइक हो ताकि इनको वो बाइक की वजह से जॉब मिले, उनको वो डिलीवरी की जॉब मिले एक मोबाइल फ़ोन के साथ? क्या उनके बच्चों के पास एक यूज लैपटॉप होना चाहिए? आई मीन, आई नो दिस साउंड्स वेरी क्लीशे एंड वेरी इमोशनल, बट द फैक्ट इज इन रियलिटी हमारी अथॉरिटीज़ कहती है नहीं होना चाहिए। हमारी अथॉरिटीज़ कहती है जो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ना दें। हमारी अथॉरिटीज़ कहती है उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए पैसे दें, उनको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे दें, उनको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स के लिए पैसे ना दें। आई टोटली डिसएग्री विद दैट, एंड 20 years outside, maybe my concept has changed. मैं समझता हूँ कि आज अमेरिका के अंदर बहुत मसले हैं, कनाडा में बहुत मसले हैं, मगर हर आदमी के पास बेसिक चीज़ है, एक घर है, एक गाड़ी है। यहाँ से जो बच्चा बाहर निकलता है, लोग भागने की ट्राई कर रहे होते हैं यहाँ से, वो क्यों निकलते हैं? वहाँ जाके पहले वो 5% डाउन पेमेंट लेके अपना घर लेगा। तो क्या उसको नहीं लेना चाहिए? उसको वेट करना चाहिए जब उसके पास वो पूरे $4 लाख आ जाए, क्योंकि उसके कभी नहीं आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 साल पहले एक सुपर पावर जो एक बाइक है वो 55,000 रुपये की थी। अब लेट्स से मैं सलीम हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे पास 55,000 हो जाएंगे तो मैं ले लूँगा। 2 साल बाद मेरे पास हो गए 55,000, मगर आज वो 78,000 की बाइक हो गई। तो व्हाट डू आई डू नाउ इन अ कंट्री वेयर इन्फ्लेशन इज मोर देन 15%? शुड आई वेट फॉर दैट डे व्हेन आई हैव मनी टू बाय एवरी डैम थिंग इन माई लाइफ, या क्या मैं इस तरह की एक चीज़ लेता रहूँ? हम एक से ज़्यादा आइटम नहीं देते, हम आपको वो सामान नहीं देते जिसके अंदर हमें लगता है कि वो आपकी नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल, हम एप्पल का आईफोन आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाएंगे, हम आपको एक न्यू IBM लैपटॉप नहीं दे पाएंगे, हम आपको वो दे पाएंगे जो एक कॉमन घर की नीड है। अच्छा, हमारी चीज़ों में अब एडिशन हो रहा है, अब हम मल्टी फॉर्म के साथ जा रहे हैं टू पुट फॉर्म्स एज वेल, मगर सस्ते वाले फॉर्म्स, नॉट
जिसमें बैक आपकी अच्छी लगे और आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है. एंड आई थिंक सो फार पब्लिक हैज़ बिन ग्रेट विथ अस, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ बाइंग तो बहुत आसान है इसमें, but returns में, but in terms of the money. And I'll go on record to say this, our NPL is less than 0.5%. अच्छा. Our NPL today is less than 0.5%. That means everyone is paying. 90% of people NPL in this case would be non-performing loans. Non-performing loans, sorry. NPL का मतलब ये कि वो लोग जिन्होंने 2 महीने से इंस्टॉलमेंट नहीं दी है. सही है. बैंक 6 महीने देखती है, हम 2 महीने देखते हैं कि 2 महीने से अगर पेमेंट नहीं दी आपने तो आप हमारे लिए डिफॉल्टर हो गए. We have less than 0.5%. दूसरी अच्छी बात यह है कि 90% लोग जो है वो डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं हमें. डिजिटली पेमेंट का मतलब ये है कि अगर आप जैज़ कैश, इजी पैसा, हमारे बैंक अकाउंट, वो बैंक वाले लोग नहीं हैं मगर वो पैसे जमा कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं या अपने मोहल्ले में जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं ये इजी पैसा इनका अकाउंट है, वहाँ पे ट्रांसफर कर दें. और वो अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको रिसीट भेजते हैं. वो जैसे अकाउंट भेजते हैं वो एक पिक्चर भेजते हैं हमको. ठीक है. राइट. अच्छा, इन जैज़ कैश नाउ वी आर वन ऑफ द recipients. So you can go and pay to Kiss Bazaar और आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपका नाम हमारे पास आ जाएगा, आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपकी आईडी है. वेरी कूल, वेरी कूल. सो और जैज़ की अच्छी बात ये है कि वो पहला मैसेज भी वो आपको भेजते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाली है 5 दिन बाद. अच्छा. सो दैट्स एन एडवांटेज. एंड ऑटो डिडक्शन फैसिलिटी भी है उसके अंदर या होगी इवेंचुअली? आई हेard the easy पैसा CEO recently and I would not do that. अच्छा. I would not do that because I know being on the other side कि ये ना हो कि तनख्वाह आए और खात कट जाए और फिर. बिल्कुल. देखिए, मेरा मॉर्गेज था जब मैं कनाडा मूव हुआ था 15 साल पहले, और डाउन पेमेंट भी मैंने लोगों से बोरो करके ली थी. जब मैंने वहाँ साइन कर दिया कि हर 5 को मेरी पेमेंट निकल जाएगी, अगर मेरे पास जॉब नहीं है और मैं गिग वर्कर हूँ तो मेरे पास 5 की जगह 15 को आ सकते हैं पैसे, 17 को आ सकते हैं. आई वॉन्ट दैट गाय टू बी फ्लेक्सिबल इनफ कि वो क्या है कि अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको 10 दिन 12 दिन डिस्टर्ब नहीं करते. उसके बाद जब हम आपको कॉल भी करते हैं और आप कहते हैं कि 25 से पहले आ जाएगी, आप हमारे लिए बिल्कुल करंट कस्टमर्स हैं, कोई मसला नहीं है हमें. तो इसलिए मैं समझता हूँ. और ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली बिकॉज गिग इकोनॉमी इज वेरी रियल. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी बाइंग अ बाइक और अ फोन फॉर फूड पैंडा एंड उनको 5 तारीख को नहीं आया. सो वी जस्ट गॉन इन एक हमने B2B डील की है राइडर के साथ ही कि अगर आपको राइडर का ड्राइवर बनना है तो मोबाइल फ़ोन और बाइक अब हमसे किस्तों पे ले लें. अच्छा. एंड दिस इज एन ऑफर टू ऑल ऑफ देम. फूड पैंडा के लिए भी वी वर टॉकिंग टू इवन बाइक एट वन पॉइंट कि अगर आपको ये चीज़ें करनी है आपके किसी ड्राइवर को, क्योंकि देखिए उसमें अच्छे पैसे हैं, वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं. और मुझे याद है मैं आपका कल या परसों टेलीनॉर या जैज़ का देख रहा था, 70% हमारी जो इकॉनमी है वो ये लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं. ये जो लोग ब्लू एरिया के अंदर बड़ी बड़ी ऑफिस में बैठे हैं, ये हमारी मेजॉरिटी नहीं है. बिल्कुल ऐसा ही है. थोड़ा सा मॉडल में वापस जाऊंगा. तो आपने कहा कि ओके सो नाउ देयर इज एसेंशियली एन ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाट दे साइन ऑन, दे हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देयर सो दे कैन गो थ्रू इट, रीड इट. कोई ये नहीं है कि यार टर्म्स एंड कंडीशंस कोई वियर्ड सी ऐप के अंदर पीछे छुपी पड़ी हैं. नहीं, बिल्कुल. एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर एंड दे कैन गो थ्रू दैट एज वेल, राइट? Does the contract mention the price and the requirement and everything? फर्स्ट पेज है टोटल प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, कौन सी डेट को आप इंस्टॉलमेंट एग्री कर रहे हैं पे करने के लिए और क्या इंस्टॉलमेंट है. So it's all in front of them. It's all in front of them. बिल्कुल. शरिया कंप्लायंस में आपने कहा कि शरिया कंप्लायंस में 3 चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ होती है कि लेट पेमेंट फ़ी नहीं होगी. बिल्कुल. सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. दूसरा आपने कहा कि जो भी होगा वो एडवर्टाइज प्रॉपरली होगा और उसके अलावा लेफ्ट राइट नहीं हो सकता. तीसरी क्या चीज़ थी? प्राइस पहले दिन डिसाइड हो जाती है. प्राइस पहले दिन डिसाइड. अगर एक चीज़ की प्राइस 70,000 रुपये है तो वो 70,000 रुपये ही रहेगी. वो उनकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स की वजह से 82,000 नहीं हो जाएगी. वो ये नहीं होगा कि पीछे से काइबोर बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई, बिल्कुल काइबोर बढ़ गया फिर भी नहीं होगी. और ऐसे भी नहीं होगी कि अगर उसकी पेमेंट 3 महीना लेट है तो आप कह रहे हैं अच्छा तुम्हारा टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा. ये नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता. Okay, so now let's talk about the guy starts paying and in 4 months आपने कहा फर्स्ट में वो एडवांस देगा जिसके बाद उसको चीज़ डिलीवर हो जाएगी. जी बिल्कुल. डिलीवर होते हुए जब डिलीवर हो जाएगी उस पर वो एडवांस देगा. अच्छा, उस पे वो सो कैश ऑन डिलीवरी का सॉर्ट ऑफ एक सो एडवांस इज द ओनली थिंग जो कैश आ रहा है हमारे पास. ठीक है. उस पर भी अब हम ये सोच रहे हैं कि कोई एक तरीकेकार हो कि हम उससे कहें यार ऑप्शन है आपके पास कि जैज़ से या इजी पैसा से कर दें आप. या जो अभी रास स्टार्ट हुआ है अगर है, वैसे मेरे ख्याल से हमारे 80% लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है. मगर अगर हो जाता है तो दिस इज व्हाट दे. बट आई मीन विद इन रास्ट एज वेल नाउ जैज़ कैश एंड इजी पैसा ऑफर्स रास्ट एज वेल, सो इट्स अगेन वो हो सकता है. अच्छा, सो उसके अंदर आप कहते हैं कि 4 मंथ्स उसने किया, 12 मंथ्स की उसने टर्म्स ली, 4 मंथ्स उसने पे किया, 4th मंथ के बाद वो कहता है हालात ख़राब हो गए, जॉब चली गई.
2 महीने से वो पे नहीं कर पा रहा, या पहले महीने वो डिफ़ॉल्ट करता है, दूसरे महीने भी आपने कहा वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, वो कहता है सर अभी नहीं हो सकता, अगले महीने हो जाएगा। अच्छा, बंदा अच्छा है, ठीक है, लेट्स कॉल हिम कामरान साहब। कामरान साहब अच्छे हैं और वाकई उनके पास नहीं आ रहे पैसे, उनकी जॉब डिफर हो गई या जॉब चली गई, व्हाटएवर। अब what's really happening? What's the mechanism here? Is he being hounded by people के यार you know, क्या हो रहा है, किस तरह से? Yeah, good question. So yeah, we try our best to get the money, not by hounding but by calling. Right. We have call center जो आपको कॉल करेगा और आपसे कहेगा कि यार आपने प्रॉमिस किया था, क्या हुआ? वो कहेगा मेरी जॉब चली गई। तो जब वो कहेगा मेरी जॉब चली गई तो हम उसे कहेंगे अच्छा अब वैलिडेशन का टाइम आ गया, अब वैलिडेट करा दो कि जॉब चली गई। तो वैलिडेट कराने का तरीका ये होगा कि वो कहेगा कि मैं ये नान की दुकान में काम किया करता था और अब ये नान नहीं बनाता या मैं अच्छी नहीं बनाता, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी है। हम कहेंगे ठीक है, क्या लगता है कब आपको वापस जॉब लग जाएगी आपकी? वो कहता है कि मुझे 1 महीना तो लगेगा। हम कहते हैं ये इंस्टॉलमेंट आपकी हमने डिफ़र कर दिया, नेक्स्ट मंथ पे कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब लेट्स से वो कंटिन्यूसली ये करता है, वो एक विलफुल डिफ़ॉल्टर है, उसका दिल ही नहीं कर रहा पैसा देने का, या उसका ज़िंदगी में और बहुत सारे मसले हैं। सो we would actually have one of our representatives go to their home, and at that point we will actually trigger the guarantor element. हम गारंटर से कहेंगे कि आपने इनकी गारंटी दी थी, इनके पास कोई रीज़न नहीं है पैसे नहीं देने का, अगर रीज़न होता हम खुद नहीं कहते, अब आप हमें इनसे निकाल के दे दें या खुद दे दें। तो नॉर्मली our past says that 99.9% केसेस वहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ वो कर देते हैं। So guarantor really works, that means? जी बिल्कुल, गारंटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। Right. और ग्रामीण बैंक में भी यही था कि गारंटर बहुत इंपॉर्टेंट है और गारंटर कल आपका क्लाइंट बनता है। Right. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसको पता हो ये बात कि ये पैसे देने हैं। अगर केस ये होता है कि फिर गारंटर और एप्लीकेंट कोई भी नहीं दे रहे होते हैं, तो फिर हम वो चीज़ को राइट ऑफ करते हैं और वो हमारी बैड डेट्स के अंदर आ जाता है। Right, and that means so there isn't there like, because it's assets, right? So isn't there like a repo situation where you repossess the? जी बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस ये मेरा लास्ट 25-30 साल का कि अगर एक आदमी 4 महीने 5 महीने से उस पैसे नहीं दे रहा है, तो चांसेस ये हैं कि उसके पास वो प्रोडक्ट भी नहीं है, वो चीज़ वो बेच चुका है, और वो बेच इस तरह चुका है कि उसने वो लिया ही इस इंटेंशन के साथ था कि वो बेच देगा। अच्छा, इसमें एक और स्टोरी है जो शायद मैं ऐड करना भूल गया। ये स्टॉप करने के लिए, ताकि वो बेचे ना, जो राइडर का आदमी डिलीवर कर रहा होता है वो बॉक्स उनसे वापस ले लेता है उस प्रोडक्ट की। ओके। और वो बॉक्स आपको तब देता है जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स 6 इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो चुकी होती हैं। वो आके आपके घर में डिलीवर करता है वो बॉक्स। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है ताकि वो आपको रोके ये सामान बेचने में, क्योंकि जब आप बेचेंगे आप और कर्जे में आ जाएंगे, क्योंकि वो जिसको आप बेचने जाएंगे वो आपको चोरी के पैसे देगा इस प्रोडक्ट के, और जब वो चोरी के पैसे देगा तो आप वहाँ भी प्रॉब्लम में है, यहाँ भी प्रॉब्लम में, और आपका खड्डा और बड़ा हो गया। तो वी ट्राई आवर बेस्ट टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। राइट, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि अगर वो विदाउट द बॉक्स एंड विदाउट ऑल ऑफ दोस थिंग्स वो एक उसकी वैल्यू एसेंशियली कम हो जाती है। जी बिल्कुल। राइट, एंड सो यू आर लूजिंग मोर बाय सेलिंग इट देन यू आर एक्चुअली यूजिंग। और उस बेचारे ने एक डाउन पेमेंट भी दी हुई है, वो भी माइनस हो गई उसके अंदर से। सो आई मीन it's not worthwhile anyone to do this, and I think that's probably why NPL is less than 0.5%, because I think people are realizing कि ये करने का मतलब ये कि मैं आगे की सारी अपनी अपॉर्चुनिटी खत्म कर दूंगा। और हम जब आदमी जाता है वो उनसे कहता है, इनफैक्ट हमारी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है ये कि इफ यू बाय फ्रॉम अस वंस एंड एवरीथिंग इज फाइन, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, बिकॉज हूएवर कम्स टू अस टेल्स अस 4 चीज़ें चाहिए, एंड वी टेल देम नहीं एक ही मिल सकती है। मुझे इसमें ये बताएं, and this is coming from talking to a lot of people. I mean, this is, I feel like the last 2 years has been a boom for fintech, but fintech के अपने nodes हैं, components हैं। पहला ज़ाहिर component उसमें ये है कि actual easy and convenient digital money transfer, and for that, you know, we've got like people like, let's say, Easy Paisa and Jazz Cash and Sada Pay and Nea Pay and all those players जो कि wallets and you know उस side पे खेल रहे हैं। उसका और बल्कि इससे I feel like I think it was the Easy Paisa पॉडकास्ट और वन ऑफ दोज पॉडकास्ट जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझे 5 स्टेप बताया था ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जी। तो उसमें जो एक पॉइंट आता है जिसमें आप जाते हैं और जाके आप एसेंशियली लोन्स वाला जो एलिमेंट है कि जिसमें आप करें, और उसमें जाहिर है कि लोगों का जो देयर इज अ सेगमेंट जो कहता है कि यार लोन्स के अंदर आप जो है वो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, यू नो ये सारे, तो उस पर देयर इज़ एन एंटायर शरिया कंप्लायंस एलिमेंट टू इट, उसका वो रेंटल्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो चीज़ है। अगेन यू कैन गो एंड चेक दैट आउट, बट
जब लोन्स की पूरी एक इंडस्ट्री है उसमें इस्लामिक फाइनेंस इज अ ह्यूज थिंग एंड इट्स ग्रोइंग रियली रैपिडली इन पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड एज वेल इन पाकिस्तान. तो जब हम इस फाइनेंस की बात करते हैं, चाहे उसको हम इस्लामिक फाइनेंस ही कह लें, उसके अंदर क्रेडिट स्कोरिंग इज एट द हार्ट एंड कोर ऑफ ए रोबस्ट इकोनॉमी दैट, लाइक यू मेंशन्ड, कि काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि हम समझते हैं कि एक इंसान को एक बुरी जगह पे रखा जाएगा और बस उसको इंसेंटिव ये दिया जाएगा कि यार अपने हालात बेहतर करो और उसके लिए नौकरी करो तो वो कर लेगा जी. काफ़ी बट एक्चुअली ह्यूमन बिहेवियर डजंट वर्क लाइक दैट. ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स व्हेन यू कंज्यूम एंड यू देन फील गुड एंड देन यू एक्चुअली वांट टू वर्क. That's your incentive to work. Right? And to be honest, I mean, this is something that we've seen in the West. This is also something that I've seen in my own house. मुझे याद है कि मैं when I got married, so I used to live in this small room जो कि उस वक्त शादी के बाद, क्योंकि the house that I live in is at this point in time 22, 32, 37 years old. Okay. ठीक है. It's very old, चिपका floor and everything. तो वो कमरा रेनोवेट करवा लिया. 2 साल शादी के बाद हम उधर ही रहे. मेरा एक्सटेंडेड था, मेरी नौकरी चल रही थी, बस मैं आई वाज लाइक whatever, सुबह उठते हुए होता था. Then we saved up and whenever my wife would say कि listen, like we need to renovate, and I'd be like यार क्यों इतने खर्चे करेंगे, जब बहुत सारे पैसे होंगे तो अच्छे तरीके से renovate करेंगे. फिर एक point पे my wife was like listen, like we need to renovate and I'm sick of living in this small room. And उस वक्त फिर हमने पैसे जोड़े and we renovated an entire floor and we built that space around it. और खाली फ्लोर था, हमने फर्नीचर लिया, हमने फ्रिज लिया और वो सारा लिया. और सर जब मैं उसमें रहना शुरू हुआ ना, that's when I was like suddenly I had this drive to work more and I didn't start working more before that. I totally agree with you. That's where I was like यार जिंदगी में तो बड़ा मज़ा आ सकता है. बिल्कुल. And I certainly wanted. So consumption is an inherent part of growth for any human being in terms of human psychology. No, I think this goes hand in hand with the fact कि हमें despondency खत्म करने के लिए लोगों में उनको चीजें देनी होगी. हाँ. कि let them enjoy those things, those basic things. You're not even telling them कि यार Mercedes, it's like fridge, खाना ठंडा रखो जिससे उनका खाना का लॉस होता है. बिल्कुल. Cell phones which connects them to the world. Bike which आपको पता है we are one of the only countries. I was with Pell yesterday, जहाँ पे year over year fridge की consumption has gone down. Number of fridges sold in Pakistan is 25% less this year than what they were last year. हमारी population has gone up and number of fridges gone down. हमारी heat wave has gone up. हमारी heat wave has gone crazy. मगर हमारे why? पैसे नहीं लोगों के पास. They don't have the money to buy it. एक तो सेल फोन ने बड़ा मसला कर दिया है बिकॉज जो घर में पैसे वहाँ जा रहे हैं. बट आप सोचें ये बेसिक चीज़ें हैं जिंदगी के और ये नहीं है इनके पास. अगर आज आप सुपर पावर सुपर स्टार होंडा आई डोंट नो बट ऑल दीज चाइनीज ब्रांड जो आम आदमी की गाड़ियाँ हैं उनसे पूछेंगे उनकी सेल भी डाउन है. उनकी सेल भी ईयर ओवर ईयर डाउन है. वो कह रहे हैं कि देयर इज सो मच गुर्बत हियर. when we were starting this, people around us said कि यार this is not a good time to start in Pakistan. पाकिस्तान में बड़े मसले इस वक्त नहीं जाओ अभी पाकिस्तान. I feel like this is the best time to start in Pakistan. But you know what? I've been hearing this since I was born. It's never been a good time. Yeah, that's true. Yet I think the best place to do business in this world is Pakistan. Yeah. I remember I was listening to Mizan Bank के मैं नाम बोल रहा हूँ इरफान साहब एक और पॉडकास्ट थी and he said कि आपको क्या लगता है ये सारे जो लोग यहाँ रहते हैं वो क्यों यहाँ रहते हैं? कितनी मोहब्बत है उनको मुल्क से. हाँ मोहब्बत है मगर दिस इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट प्लेस टू मेक मनी फॉर एवरी वन ऑफ देम. तो हम ये जो कहते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड टाइम, ये लोग नहीं डिजर्व करते हैं, अभी इनको ना दें, ये इनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी. आई थिंक दिस इज जस्ट अ माइंड सेट विच नीड्स टू बी चेंज्ड. मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें ऐड कर देता हूँ कि हम किसी से बात कर रहे थे एक बैंक से. हमारी एक फैसिलिटेशन सेंटर इज ऑन आई चंद्रीगढ़ रोड विच इज़ द हब ऑफ बैंक्स in Pakistan. And one of the banker, a very close friend of mine and very senior banker said यार मुझे समझ नहीं आता हम भी ये चीज़ें देते हैं ये आपसे आके क्यों ले रहे हैं. अच्छा एक दिन आ जाओ, let's take an interview of a client, not someone I know, someone who walks in. He came one afternoon, this was about 4 months back, and there was a person sitting there with और वो देख रहा था कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं. वो अपनी बेटी को साथ लाया था कि प्लेस वो करेगी, बताएगा ये कि हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं वगैरह वगैरह. तो वो उस दोस्त ने मेरे पूछा उनसे कि भाई आपको पता है ना यहाँ पे ये 2 बड़े बड़े टावर्स हैं ये बैंक ही है. तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो आपने यहाँ से क्यों नहीं ली, यहाँ से क्यों पैसे नहीं लेते, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, तो बहुत छोटी सी जगह है. तो उसने कहा सर
मेरे कपड़े देखें, मुझे ब्रांच में एंटर नहीं होने देगा आपका बार गार्ड, और एंटर हो जाएगा तो कैशियर हाथ नहीं मिलाएगा मुझसे। कोट अनकोट एग्जैक्ट वर्ड्स थे इसके। और ये सच है बात, ये दिस इज नॉट इवन लाइक इट्स सम माइंडसेट। 75,000 वो आदमी अर्न करता है अपनी रेकड़ी से एवरी मंथ। ही इज नॉट अ स्मॉल गाय, ही इज स्कैर्ड टू एंटर अ ब्रांच। तो आई मीन हाउ मच प्रोग्रेस हैव वी डन सो फार? It's very unfortunate. And I was telling my friend too, it's the inefficiency of the banking sector. That's why people like us have employment. Yeah. If they were efficient, we didn't deserve to be there. Absolutely, right? Absolutely. And so I'll come back to the credit scoring, right? I feel like कि अगर मैं macroeconomics देखूँ, sure, I mean you have a great business model, and I think it's very much required, particularly in this troubling time, जब people require items, but unfortunately they can't afford it on a get-go. It's not a bull market right now, and so and to be very honest, एक बात होती है ना कि purely consumption based requirement. जो बाइक है, जो सेल फोन है, मेरे हिसाब से these are tools. They are not consumption items. Add computer in that too. Yeah, computer, absolutely. Laptop. A used laptop, सस्ती 35-40 हज़ार रुपए की लैपटॉप। ये बड़ी मुझे याद है कि पिछले दिनों someone messaged me from Hyderabad or some place in interior Sindh, and then he was like, I'm just like 17-18-year-old kid and I've been learning freelancing. मैंने सारा सीख लिया है लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, और आप मुझे 70-75 हज़ार रुपया दे दें तो मैं जो है ना मैं एक लैपटॉप ले लूँगा, और जैसे ही मेरी फ्रीलांसिंग करियर उठेगा तो मैं उसको आपको रिटर्न कर दूँगा। Now even I know for a fact that kid has like 10-15,000 rupees. उसको बेसिकली वो चाहिए, वो एक गो में नहीं ले पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो जाके उसके पास गिग्स पड़े हुए हैं, उसने चीज़ सीख ली हुई है, तो इट्स रियली जस्ट हिम getting that laptop, beginning to work, and through that work 6, 8, 10, 12 महीने के अंदर वो उसी पैसे को घुमा के he has a laptop. बिल्कुल. And then after that it's so these are tools. अच्छा, अब अगर मैंने इस इकोनॉमी को, अगर रियली मैंने पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिक्स करना है, तो जो फंडामेंटल चीज़ है वो ये है कि डेटा, राइट? लाइक एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि in the future if I'm able to identify कि मेरा कौन सा बंदा जो है वो अच्छा परफॉर्मर है और कौन सा बंदा जो है वो शेकी परफॉर्मर है, कौन सा बंदा पुअर परफॉर्मर है, तो then I can really run the economy on hyper mode, right? Like steroids जैसे कि मैं चला सकता हूँ उसको। एंड अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये हुआ कि बैंक पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी थी, तो वो वैसे ही डेटा बड़ा वो था, उस पर भी उन्होंने जिस तरीके से उसका डेटा गैदर किया वो बहुत ही प्रिमिटिव है। लाइक इवन टिल डेट आज तक वो डेटा वेटा तो कुछ भी नहीं है, बस वो सैलरी स्लिप पे ही निज़ाम चल रहा है कि सैलरी स्लिप है तो क्रेडिट कार्ड है, सैलरी स्लिप है तो लिमिट्स हैं, सारा कुछ है। नोबडी इज़ लुकिंग एट कि भाई इसकी पीछे, और अगर वो देख भी रहे हैं तो उसके ऊपर वो कुछ करते नहीं है कि इसके पीछे कितना इसने एक्चुअली क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की, कितना क्या किया, सारा कुछ। जिसकी वजह से मुझे न्यू एज जो आपकी जैसी कंपनीज हैं उससे मुझे बड़ा वो एकदम से खुशी होती है कि यार ये लोग शायद उस साइड पे चली जाएं। तो क्वेश्चन मेरा ये, आपने ये तो बता दिया कि पिछले 2 डेकेड्स के 2.5 लाख लोगों को आप ले तो आए जी, क्या आने वाले वक्त में डू यू सी दिस एज ए कंपोनेंट ऑफ योर बिजनेस एज वेल, वेयर जस्ट दिस डेटा, देखिए 2.5 लाख आपके पास है तो वो डेटा सिर्फ आपके लिए नहीं, वो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा यूजफुल है, ठीक है? और ना सिर्फ जस्ट दैट डेटा एज अ स्टैंड अलोन, बट रादर आपने कहा गारंटर मेरा होगा करियाने की दुकान वाला जी, तो मेरे पास क्या वजह है कि दस्तगीर मुझे आके अपने नोड में नहीं बता सकता कि ये बंदा जो है वो बड़ा अच्छा है, if he has the right data, and so I club that data with my data and suddenly now I have a lot more insight on that user. I club that data with let's say EasyPaisa's data and JazzCash's data, and then there are just so many of these nodes essentially जो कि जहाँ पर आके मैं really I can begin to get a very good picture. So while you're saying I get के individually this is where you'd go, right? Give them one product, then move on to the next one. After 4-5 products, maybe say, okay, let's say like you can now get 2 products. जी, बिल्कुल. And you scale from there. But what happens when you begin to collaborate as part of, and I know कि पाकिस्तान में ना collaboration is the पता नहीं क्या वजह है कि एक अजीब सी वो समझी जाती है, अस्तगफिरुल्लाह, कोलैबोरेट करने को ना बोलो भैया, मेरा काम उसका काम। But really it's partnerships are what drive a good economy. No doubt about it. And partnerships represent trust in an economic system, and that trust, अगर वो ट्रस्ट नहीं है इसका मतलब है कि यार आपका फिर पूरा निज़ाम ही ख़राब है। हमने एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया आजकल, सिनर्जीज। Absolutely, right? Yeah. And I think हमने ये कुछ नेटफ्लिक्स के शोज से निकाला ये वर्ड, वहाँ बड़ा यूज़ होता है ये, तो बिल्कुल हम भी उस पर काम कर रहे हैं। डे यस्टरडे वी वर विद ज़ुहैब
from Dastagir for those shopkeepers. कि why do we need to validate those shopkeepers when you've already done that? Yeah. Let them also now be our client, right? So he's open with it, and we are about to roll something out. Same with Rosie. I was with Monas Rahman a few days back, and the idea is that there are so many people out there. We know their data. Why don't we offer them these things? Why do they have to start from scratch? The other part, and I want to say well done to State Bank on this, is उन्होंने 2 credit rating agencies को approval दी है जो अब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. अब जिस मिनट हम NBFC बन जाते हैं, हम पे ये कंपल्शन है कि हम सारा डेटा इनको रिपोर्ट करेंगे. अच्छा, उन credit rating agencies को. So they become your central repositories. And I think that nothing beats that, because ये सिर्फ मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये सबके लिए अच्छा है. सर, ये इससे पहले नहीं था पाकिस्तान में? Not that I know of. Not for a common man. देखिए, है था, बैंकों में था. बैंकों में there was a system. आम आदमी के लिए नहीं था. आम आदमी के लिए नहीं था. That's just mind blowing. अच्छा, अब आम आदमी भी अब मसला ये है ना, अब आम आदमी किसे कहते हैं? जिसको सैलरी स्लिप मिलती है, 12% पाकिस्तानी को सैलरी स्लिप मिलती है सिर्फ, बाकी 88% का क्या मसला है? वो फिर से मैं कह रहा हूँ, वो नान बनाने वाले का क्या प्रॉब्लम है? मगर अगर वो नान बनाने वाले का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ और वो डेटा आप यूज़ कर रहे हो, कि अगर वो आदमी कहीं और अप्लाई कर रहा है और नजर आ रहा है कि उसका रिकॉर्ड अच्छा है, उसकी लाइफ ईजी हो जाएगी. और ये सारा CNIC टैप्ड है. Everything is going with CNIC. The other thing that we are doing is we are trying to bring a good local bank on our cap. And the idea here is we are not a money intensive model. We don't need too much money because we are making money ourselves. But the idea to bring a bank is that we want these people to graduate from us to them eventually. Right. What I mean by that is हमारी कैपेसिटी, हम होम लोन नहीं दे पाएंगे, हम कार लोन नहीं दे पाएंगे, हमारे मंत्रा के खिलाफ है ये चीज़ें, मगर उसका स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है, उसको ये चीज़ें चाहिए. तो अगर आप हमारे साथ पार्टनर्ड हो, तो कल आप ये देखोगे कि अच्छा, ये 1 लाख लोग ऐसे हैं who are perfect for last year or last 1.5 years. Now let's target them, let's make something out for them, a product, maybe a form of a 10,000 रुपये का credit card. Why not? Why not give everyone a 10,000 रुपये credit card? Yeah. Right? So that's the idea. That's the thought process, which sometimes, as my wife says, drives me too much into this. But I think इसका impact आएगा. And do you think would that be a conventional bank, or would you think a new age bank maybe would be? I think every conventional bank that I am speaking to now has or wants to be a digital bank as well. Right? Or applied for a digital bank license. So I think सबका mindset change हो रहा है. सबको नजर आ रहा है कि बहुत bad press मिल रही है खाली TVLs में पैसा डालने से. I come from a banking बैकग्राउंड, सो आई नो कि सारी जिंदगी बैंकें चली ही उसी के ऊपर है कि सब पैसा लें आम आदमी से और सारे डाल के गवर्नमेंट को दे दें और आराम से खाएं और डिविडेंड दे दें. राइट? I think everyone's looking for the alternative. Everyone's working hard towards it. Good point is that even choti banks, like for example, bank that I'm very fond of because my father used to work there, Suneri Bank. Right. They're not our partner, but I see that the thought process is changing from my father's days. Right? Which is great because eventually. वो नान बनाने वाले का बच्चा नान नहीं बना रहा होगा. And to tap him, you have to go with his dad. Absolutely. You've mentioned Grameen Bank a couple of times. For the sake of the audience, if you can sort of explain for them to sort of go and read up on it. क्या है क्या उसकी अच्छा, मेरे पास again जितनी knowledge है मैं उसी की तरह आपको बिल्कुल. Absolutely. I just want you to nudge them towards that, and they can just Google is the. उसका एक founder था मोहम्मद यूनुस. Right. और मोहम्मद यूनुस का concept ये था कि. And this is Bangladesh. This is Bangladesh. जो हमसे कहीं नीचे हुआ करता था. उसका कॉन्सेप्ट ये था कि लेट्स स्टार्ट विद द थॉट कि हर आदमी ऑनेस्ट है. लेट्स नॉट गो द अदर वे कि इसको वैलिडेट कैसे करें कि ऑनेस्ट या नहीं है. कहता है लेट्स अज्यूम एवरीवनस ऑनेस्ट एंड आई हैव हर्ड हिम से दैट. देन let's get 2 other people who say that he's honest. Right. So now you have 3 people involved in one sale. Whether you give them money for seats, whether you give women money to buying sewing machines to generate employment, but it should be very easy. आसपास के 2 लोगों को करें, 5 लोगों का ग्रुप बना लें. उन्होंने ये भी स्टार्ट किया था कि 5 लोगों का ग्रुप बना लें और वो 5 लोग एक दूसरे को गारंटी दें. अब अगर उसमें से एक डिफॉल्ट करता है तो ये चारों रिस्पॉन्सिबल हैं. एंड देन एवरीवन गेट्स वन प्रोडक्ट ईच. राइट? सो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि सोशली कम्युनिटी को एसेंशियली सोशली लेट देम डिसाइड हु इज अ गुड गाय एंड हु इज नॉट अ गुड गाय. राइट. And that it's a huge entity, I believe, at this point. It's huge. I think he got a Nobel Prize as well, from what I remember. And I mean, a lot of other countries. I know one of the banks that we funded through another thing in Mexico was completely working on Grameen Bank model. Very I mean, cool. they're known world over for what they did. आरिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि you've been so I mean
film and then loans and then banking and then all sorts of different industries. आपने पढ़ा हुआ क्या है? दुखती भी रख okay so school High school and then so college. school I did St. Michael's कराची के अंदर, जो उस ज़माने में एक अच्छी स्कूल हुआ करती थी. मेरे बैच के लोग, एक एंग्रो का चीफ है आज, एक बैंक फलाह का टॉप 3 के अंदर है, एक दूसरा एंग्रो के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, एक STZA का नंबर 2 है, CEO of STZA is from my batch in St. Michael's. अच्छा. So very well placed people. I did my grade 9 from there and then my father was working in Habib Bank, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया सिंगापुर. तो मैंने अपनी हाई स्कूल सिंगापुर से की. आई कम बैक एंड एवरीवन इज प्लानिंग टू गो अब्रॉड. सडनली अच्छा, इसके दौरान वाइल इन सिंगापुर एंड पाकिस्तान मेरे अब्बा को एक प्रॉब्लम था कि वो मुझे अपनी मीटिंग्स में साथ ले जाया करते थे. ही वॉज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू कासिम पारक, द ग्रेट कासिम पारक. सो आई बीन इन मीटिंग्स व्हेन ही इज बीन टॉकिंग एंड पहले तो मुझे होता था क्या हो रहा है, देन आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. सो वाइल इन सिंगापुर 2 महीने मैंने इंटर्नशिप की अभी बैंक के अंदर, और मुझे नज़र आ गया ये मेरा काम नहीं है. क्योंकि वो इतना लंबा प्रोसेस है, डिस्पैच डिपार्टमेंट से जाना वगैरह वगैरह. मगर बिजनेस में ओवरऑल इंटरेस्ट था. तो पाकिस्तान जब आया करते थे तो मैं यहाँ से जूते ख़रीदता था, वहाँ मैं बेचता था ड्राइवर्स को. वो 1000 रुपये के जूते 2000 में, 4000 में. सो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ बिजनेस सेंस, और नॉट सेंस बट लाइकिंग टुवर्ड्स बिजनेस. Right after school, when I came back, I used to go see these guys at Electro. One of them was my uncle, and I used to look up to him. And he's like, "What are you planning to do?" I said, "I'm planning to join a school here, a university here, because I want to do something on the side." He said, "Why don't you join me?" And I said, "Join you? 10 आदमी की company. What am I going to do?" He said, "Sales start कर देना." So I go there, and with me I bring in 2 other friends of mine. Now these are typical कराची में उसे कहते हैं burger people. ठीक है. And हम चले जाते हैं वहाँ पर. हम क्या करेंगे, हम किस्तों में कंप्यूटर्स बेचेंगे in 1995. तो पहली बात तो मैं समझ नहीं है कि किस्तों में कंप्यूटर्स कैसे बेचेंगे. Anyway, so we started that journey there. Part time I started a place called Greenwich, जहाँ से मैंने 3 साल किया. I'm not a graduate. I never finished it because by 2003 we were the largest company in Pakistan. अच्छा. We were in Habib Bank. We had given Habib Bank 4,000 computers, UBL 3,000 computers. Karachi Lahore Stock Exchange को computerize हमने किया था. So we were like nothing less than CEO level. अब उस टाइम में स्कूल में जब जाता था, यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लग रहा था कि इसको सिखा सकते हैं, सीख नहीं सकते, which is wrong. I don't advise anyone to do that. I think I got lucky. I think people should go with the system, graduate from wherever they can. क्योंकि graduate करने में सिर्फ स्कूल का फ़ायदा नहीं है, नेटवर्क का फ़ायदा है. जो दोस्त आपके बनते हैं, जैसे आज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि STZA में मेरा दोस्त है, एंग्रो में मेरा दोस्त है, यहाँ एक दोस्त है, बैंगल फलाह में दोस्त है. सो इट्स कमिंग इनटू प्ले नाउ, राइट? But no, I did not finish my graduation. I went to University of Phoenix as well, online, but just did not get interested in it. So if you ask me my last degree, so that was my high school. Achha, very cool. Kis Bazaar right now, I mean, it's in Karachi. Ji. So Kis Bazaar, yeah. So Kis Bazaar is in Karachi. We do get applications from outside Karachi, some of which we do deliver, where we are 100% sure. But primarily it's in Karachi only. Plan is to go to Hyderabad, Lahore by the end of this year, and then maybe Islamabad and close by places to Lahore. See, Hyderabad ka point hai ki Karachi we already there, we understand the system. We'll just go Nazdeek mein by next year to Islamabad and other places. Acha. Do you think Punjab will be, I mean, so Karachi I know is a huge middle class marketplace, and the business case is just phenomenal, but particularly for you, Punjab has not just the population but the muscle as well. Consumption has been, for most part, businesses have always eyed up Karachi because educated middle class, and it's much easier to do a lot of things there. But recently, especially in the last 10-15 years, Punjab ki jo ek growing middle class nazar aana shuru hui hai, and the numbers have been phenomenal. But I also know that culturally, with your experience and everything, you know Karachi probably through and throughout. Not just that, we were doing it all over, right? Just say Blue Area mein, we were there for 10 years, right, selling laptops on installments. We were there in Hafiz Center, Lahore for years and years. Experience was very different, no doubt about it. Karachi was like 97% no problem. Lahore was maybe 70% no problem, and Pindi was maybe about 60% no problem. As we went further north, maybe hamari expertise nahi thi. I'd like to think like that, but yeah, I mean, now the idea is
वी आर वे बेटर ट्रेन देन व्हाट वी वर. अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों में. एंड हमें एक ही चीज़ मार्केट करनी है. आप हमें इसलिए पे कर रहे हैं ताकि आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट मिल सके. हाँ. अगर मुझे लगता है हम लोगों को ये समझा सके, क्योंकि सबको एक से ज़्यादा की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है कि फिर इतना ही डिफिकल्ट नहीं होगा नेविगेट करना. हाँ, मुझे लगता है कि कराची का एक पर्टिकुलर स्टाइल है. ज़ाहिर है कराची जो है वो वहाँ पर खासकर जो रिहायशी है वो कहीं जा नहीं रहा, वो जनरली कराची में ही बेस्ड होता है. बट आप पंजाब आते हैं ना, पिंडी, लाहौर, तो यहाँ का बंदा जो है उसका गाँव आधा पौना घंटा दूर है, वो बड़े आराम से गायब हो जाता है. एंड सो यू नीड टू क्रिएट ए लोकलाइज्ड मॉडल for that particular, for those markets. But I also think the opportunity to really ramp up these areas, क्योंकि यहाँ पर the population is huge, and particularly आप लाहौर और रावलपिंडी इस्लामाबाद से हट के, what I would really like to hear is what do you have a plan, or are you looking at the markets in, let's say, Gujranwala, Faisalabad, Sialkot, you know, a lot of these sort of towns and cities, but खैर हैं तो बहुत बड़ी in population, but have been conventionally ignored. Absolutely. So like just to go back in my last answer, मैंने आपसे कहा कि हम कराची के बाद हैदराबाद जाएंगे, हम उसके बाद लाहौर जाएंगे. सो हैदराबाद का मतलब है कि हम सखर भी जाएंगे, और जब हम लाहौर जाएंगे तो हम फिर इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, हम उसके बाद मुल्तान जाएंगे, मे भी गुजरांवाला जाएंगे, मे भी रहीम यार खान जाएंगे, उसके नज़दीक एरियाज़ में भी जाएंगे. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगेन कि हमने उन लोगों को कभी ट्राई नहीं किया. हमने अज्यूम कर लिया कि ये छोटे गांव वाले हैं तो इनकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि इनको पैसे वापस नहीं करने होंगे. आई थिंक जस्ट लाइक आवर एक्सपीरियंस देयर, यू नो, इन कराची वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंटेल इज पठान्स हु कम टू कराची टू वर्क. Yeah. From Peshawar, from Azad Kashmir, and Punjabi from Azad Kashmir, and different places. And they pay, even if they go back, they pay because first of all, there are 3 people involved instead of 1. Because of being on the ground, हमने ये एक चीज़ देखा कि it's good to have एक टेस्ट ऊपर के 3 आदमी हो. दूसरी एक बात ये भी है कि उनको भी पता है कि उनको एक दूसरा आइटम भी चाहिए होगा. उनको कोई उम्मीद नहीं है बैंकिंग सेक्टर से कि कल उनको एक हबीब बैंक लोन दे देगा या UBL लोन दे देगा. हम कितनी ये लोनों की बात करते हैं ना, नैनो लोन्स वगैरह, कभी ट्राई तो करें उसको लेने के लिए. इट इज़ सो डिफिकल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू यू हैव टू नो समवन एवरीवेयर. राइट. इस पूरे साइकिल के अंदर इस हमारी कंट्री में और बाकी कंट्री में फ़र्क ये है, कोई जानने वाला कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है. इसलिए ऑनलाइन मॉडल का मकसद ये था कि कोई जानने वाला नहीं चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जिससे आप ऑर्डर कर सकें. और वो भी नहीं है तो आ जाए हमारे शोरूम में कहीं पे, किसी भी, हम उसे मददगार कहते हैं, कम टू एनी फॉर मददगार्स एंड नॉट पुलिस वाला मददगार, एंड वी विल हेल्प यू प्लेस दैट फर्स्ट ऑर्डर. Right. And hopefully with that first order you'll have a device जिससे कल आप खुद अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे. Makes sense. Sounds exciting. अरे भाई, we're over the 1 hour mark, and I know कि आपका अभी एक फ्लेवर रह गया, और वो VC वाला फ्लेवर था. And I know that you've been very active in the startup space. पाकिस्तान के अंदर बड़ी मज़े की स्टार्टअप स्पेस हुई भी है, और काफ़ी ज़्यादा जो है एंथुजियाज़म रिसेंट टाइम्स में आया है. बट उसी का एक डाउन टर्न भी आया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन एंड कमोडिटी सुपर साइकिल. तो उसके ऊपर भी आई वांटेड टू हैव दैट डिस्कशन. आई होप दैट यूर इन इस्लामाबाद एनी टाइम सून, इन द फ्यूचर, एंड वीड लव टू कंटिन्यू दैट. एक सवाल मैं पूछूंगा, जनरली आई आस्क ऑल ऑफ माई गेस्ट्स, स्पेशली जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं. you're in your late 40s, I would assume. जी, just turned 47 3 days back. Belated happy birthday. Thank you. And so you've been into Singapore as well. अब आप Canada में based हैं. I'm sure you've traveled a lot here and there, different countries में. पाकिस्तान को आपने जो especially जो Gen X, I would say you are, right? Like so Generation X ने पाकिस्तान के बहुत सारे phases देखे हैं. ज़िया-उल हक वाला भी देखा है, 90s वाला भी देखा है, फिर मुशर्रफ, and then अब जो उसके मुशर्रफ के बाद जो डेमोक्रेसी चल रही है. Knowing what you know now, अगर आप उस पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक फ्यूचर की एक वो दे सकें, प्रिडिक्शन दे सकें. लाइक आप ये ज़ाहिर है ये स्टार्टअप भी कर रहे हैं, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर तो रहा है, बट आप कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं लाइक यू सेड अर्ली ऑन कि इट्स द बैड टाइम टू डू बिजनेस इन पाकिस्तान, बट इट्स ऑलवेज अ बैड टाइम. हाउ डू यू सी पाकिस्तान 28 years from now in 2050, knowing what you know now, seeing what you've seen throughout your life? Very difficult to predict something like this, but I do feel a country like Pakistan, we're not a banana republic, और हमें वो छोड़ भी नहीं सकते. Luckily for some things that we have acquired over time and the population that we have, I do feel that things will be positive. I do think some work has to be done on population control. I think that is the key, because of unfortunately the अनकंट्रोल पॉपुलेशन हमारे पास ये नेगेटिव हो गई है, ये रिसोर्स जो पॉजिटिव होनी चाहिए.
दूसरा मेरा ये बिलीफ है, आई एम नॉट पॉलिटिकल एट ऑल, मुझे लगता है जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछले वाले से बेहतर करने की ट्राई करती है, खाती है नहीं खाती है, ऑनेस्टली आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस। मैं मेरे ख्याल से अगर आप दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज देखेंगे ना, हर जगह करप्शन है, मगर वो आम आदमी को बेसिक करने के बाद करप्शन करते हैं। करने दें उनको करप्शन, टिल दे कैन टेक केयर ऑफ यू एंड आई एज वेल। सो आई डू फील वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो और एनीवन एल्स, राइट, जो भी आते हैं, मुझे लगता है दे विल, वो जो क्रिएट हो गया एक नॉच, उससे बेहतर ही करने की ट्राई करेंगे। सो आई थिंक वी विल डू बेटर देन व्हाट वी हैव, प्रोवाइडेड हम खुद भी ये सोचें कि द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम अस। देखिए बहुत सिंपल है कि हम we were again in that conference and we were saying कि मेरी फ़्लाइट आ रही थी फ्रॉम दुबई टू लाहौर। जब दुबई टू लाहौर फ़्लाइट पहुंची, अभी लैंड की, लोग खड़े हो गए अपनी बैग्स के लिए, बिजनेस क्लास में, इकोनॉमी क्लास में, हर जगह। अब जब फ्लाइट वही दुबई जा रही होती तो किसी में हिम्मत नहीं होती है करने की, वही पाकिस्तानी, सब कुछ वही। व्हाई इज़ दैट? व्हाई डू वी टेक आवर कंट्री फॉर ग्रांटेड एंड देन वी आर द बिगेस्ट क्रिटिक्स एज वेल कि इसने तो हमारे साथ ये कर दिया, इसने ये कर दिया। रहना इधर ही है हमें। दिस इज द बेस्ट प्लेस वे वी कैन मेक मनी। So I think to answer in one line, I think we'll be much better off than what we are today. Let's all stay positive. Let's grow towards where we want to be. And already there are sectors which are showing unbelievable growth. Like for example, not the startup sector overall, but I think gaming, for example, exports, for example. I think with zero input, they will probably be the best sectors in coming times. मतलब ऐसा होगा कि जो ट्रॉफीज़ हैं वो उनको मिल रही होंगी in coming times. और आप देखिए बड़े बड़े ग्रुप इसमें जा रहे हैं. For example, I think it's pertinent for me to mention Fatma Gobi. Absolutely. I met the gentleman for the first time yesterday and I was pleasantly surprised. I was like, outstanding that a guy with all this background is going into these teeny mini startups. Yeah. Right, and I think others are following them as well. So I think we are on the right path. थोड़े से अप डाउन्स हर जगह हैं. किसी कैनेडियन से पूछें उसका कनाडा के बारे में क्या ख्याल है, 4 गालियां देगा वो ट्रूडो को, right? But it's the best place in the world to live as well, right? So I think inshallah things will be better. I hope and I'm excited to see that future which is better than our own, and I totally agree with you. I think evolution जो है ना वो एक natural part of this process है जिसमें वो democratic evolution भी होती है. It's always going to be better than the last one. And I think signs also tell you, right? जैसे हमने पहले महीने के अंदर 250 लोगों को सामान दिया, ठीक है. लास्ट मंथ हमने 1500 को दिया, इस मंथ मेरे ख्याल से हम शायद 2000 को दे रहे हैं. नाउ दैट मीन्स पीपल वांट दैट प्रोडक्ट. इसका मतलब कि उनके पास एटलीस्ट वो पहली पेमेंट तो है ना, कि वो लेना चाह रहे हैं. तो इजंट दिस अ गुड साइन? बिकॉज दीज पीपल इफ वी वर नॉट देयर, आई थिंक वो इन चीज़ों में नहीं आते. वो बैठे होते मंथ ऑन मंथ. अच्छा जी ठीक है. जब वो बैठे होते तो वो क्या करते हैं? वो हसद करते हैं, वो बुरा फील करते हैं, वो कुछ ऐसा सोचते कि हमारे पास तो नहीं आएगा, अब हमारे बच्चों को जाने के लिए लेट्स डू द सैक्रिफाइस एंड लेट्स डू समथिंग रॉन्ग. राइट. सो आई थिंक द फैक्ट दैट देयर आर मोर स्टार्टअप्स कमिंग इन, startups like Abhi, for example, giving an advance payment, a startup like Dastagir, for example. I mean, I think all this is in the right direction. And then the best part about Pakistan now is that Pakistani local VCs are getting more active than they ever have. They've gone to conferences like हम जो बात कर रहे थे, Unconference of Ali Fahad, again a great guy जिसका हर जगह नाम आना चाहिए. उसने पाकिस्तान को मैप में लाया है, जहानारा ने पाकिस्तान को मैप में लाया है. उन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो पाकिस्तानी VCs आ रहे हैं, अब उनको गोरे फंड कर रहे हैं. There's a VC called I2I, very famous. Kulsum and Misbah, 2 women. I mean, I am thoroughly impressed at the fact that they're able to get funding from places जो पाकिस्तान को देखेगी नहीं. And I've seen it with my eye. Right? I think Atif has done a great job. I think Fatma Gobi is doing a great job. Zain's done a great job. So all these people are the new ambassadors of our country because they go out एंड कशकोल वो फैलाते हैं, वो पैसे लाते हैं और वो यहाँ डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि ये स्टार्टअप्स आगे जा सकें. सो आई थिंक चीज़ें अच्छी हैं. लेट्स स्टे पॉजिटिव. आप इस तरह का शो करते रहें, लोगों को सच बताते रहें कि फैक्ट ये है, बातें ये हो रही है पर फैक्ट ये है. एंड आई थिंक वी विल बी ऑन द राइट पाथ. इंशाल्लाह. अरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन, फॉर टेकिंग द टाइम आउट particularly. Thank you again for having me. It's an honor. Sir, thank you. The pleasure is all mine and I hope to see Kiss Bazaar growing as it's growing. I loved having this conversation with you. आपका विजन बड़ा मजे का है. I've had a lot of BNPL conversations. मैंने उसके आखिर में इस तरह नहीं बोला. So this is actually coming straight from my heart. I appreciate it. Thank you. You know, I love what you guys are doing and would love to see where we also want to show by numbers what we are doing.
अभी numbers बहुत कम है. We have 7,000 people that have taken from us. The day we get to 700,000, we'll be a happier bunch for sure. Inshallah, 100%. Thank you so much for coming in. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. Comment section में बताएं. What do you think about the model? What do you think about buy now pay later? What do you think about credits and the Sharia compliance of it? I love to hear your thoughts. कि इस तमाम चीज़ के बारे में, if you have any agreements, disagreements, let us know in the comment section below. इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब को बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इसी पैसा जायज़ का इशारा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Syed Muzammil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.